ई बहुत पहिने लिखल गेल कविता अछि, लेकिन कतौ पढ़ने नहीं छी, तो हम सोचलहुँ सबसे पहिने एही ठाम पढ़ी एकरा। शीर्षक छै अंतर्द्वंद। हम जा रहलहुँ अछि कतौ सएह नहीं बूझि रहल छी, तैं अपने अंतः मन सँ सदिखन जूझि रहल छी। त अपने विचार अगले क्षण मिथ्या बुझा रहल अछि, अपने विचार अगले क्षण मिथ्या बुझा रहल अछि, तैं हमरा आगा पाछा नहीं सुझा रहल अछि। आ बैसल छी सोचबा लेल किछु नहीं फुरा रहल अछि, बैसल छी सोचबा लेल किछु नहीं फुरा रहल अछि, आ सबटा विचार मनहिक भीतर घुरघुरा रहल अछि। त अपने विचार अगले क्षण मिथ्या बुझा रहल अछि, तैं हमरा आगा पाछा नहीं सुझा रहल अछि, आ बैसल छी सोचबा लेल किछु नहीं फुरा रहल अछि, आ सबटा विचार मनहिक भीतर घुरघुरा रहल अछि। हम किदन कहाँ छी बाजि रहल से बूझि रहल छी, आ अपने अंतः मन सँ सदिखन जूझि रहल छी। दोसर देखियो जे प्रकृति संग मनमानी देखि अचंभित छी हम, प्रकृतिक पलट प्रहार सोचि बड़ विचलित छी हम। एकसर की कऽ सकबै तैं चुपचाप रहै छी, आ मानवकृत अत्याचारक सब अभिशाप सहै छी। त प्रकृति संग मनमानी देखि अचंभित छी हम, प्रकृतिक पलट प्रहार सोचि बड़ विचलित छी हम। एकसर की कऽ सकबै तैं चुपचाप रहै छी, मानवकृत अत्याचारक सब अभिशाप सहै छी। आ क्यों ने सुननिहार अछि, क्यों ने सुननिहार अछि, व्यर्थे भूकि रहल छी, अपने अंतः मन सँ सदिखन जूझि रहल छी। अंतिम जे लोकक देखि तमाशा मन अकबका रहल अछि, लोकक देखि तमाशा मन अकबका रहल अछि, संबंधोक विचार न तैं सकपका रहल अछि, आ नैतिकता केर ह्रास देखि छटपटा रहल अछि, आगाँ केर परिणाम सोचि कपकपा रहल अछि। त लोकक देखि तमाशा मन अकबका रहल अछि, संबंधोक विचार न तैं सकपका रहल अछि, आ नैतिकता केर ह्रास देखि छटपटा रहल अछि, आ आगाँ केर परिणाम सोचि कपकपा रहल अछि। त हम बताह छी वा ओ से नहीं बूझि रहल छी, अपने अंतः मन सँ सदिखन जूझि रहल छी, अपने अंतः मन सँ।